Welcome back to our channel. Today we have an exciting topic to explore. The difference between compares to, compared to, compared with, and in comparison with or to. You know, language can sometimes be a bit confusing, but don't worry, we've got your back. We'll break down these phrases and give you a clear understanding of how and when to use them. So are you ready? Let's get started. Let's begin with compared to. This phrase is used when we want to highlight similarities between two things, people or concepts. जब हम दो ऐसी चीजों के बीच समानताएं ढूंढते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग है, तब हम compares to का यूज करते हैं. जब हम कहते हैं कि x compares to y, तो हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि x y के साथ कुछ समानताएं या लक्षण साझा करता है. यानी x और y में कुछ सिमिलैरिटीज है. उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक ऐसा फोन खरीदा जो बहुत ही एडवांस है, जैसे कि कोई कंप्यूटर हो, तो हम कहेंगे माई फोन कंपेयर्स टू अ कंप्यूटर. इफ वी से इट इन हिंदी इट विल बी लाइक मेरे फोन की तुलना कंप्यूटर से होती है. सम अदर एग्जाम्पल्स आर हर डेडिकेशन कंपेयर्स टू दैट ऑफ अ मैराथन रनर. His artistry compares to that of Picasso. See, with compares to, we are putting X and Y side by side and saying, hey, they have some common ground. It's like showing that पहले व्यक्ति की डेडिकेशन एक मैराथन धावक के समान है और दूसरे व्यक्ति की आर्टिस्ट्री पिकासो के समान है. Now, let's move on to compared to. This one is pretty straightforward. We use it to draw a comparison between two things or highlight their differences. इस बार हम दो चीजों के बीच समानताएं नहीं, किंतु उनके बीच के अंतर को ढूंढते हैं. उदाहरण के लिए, आपने जो फोन खरीदा है उसकी तुलना फिर से एक कंप्यूटर से करना और कहना कि मेरा फोन उस कंप्यूटर जितना बड़ा नहीं है. My phone is smaller compared to that computer. Some other examples could be, the taste of this chocolate is nothing compared to the flavor of that one. Or, my little brother's knowledge is better compared to mine. With compared to, we're showcasing the contrast between the two things. पहले उदाहरण में हम कह रहे हैं कि एक चॉकलेट का स्वाद दूसरे के स्वाद की तुलना में कम प्रभावशाली है, और दूसरे उदाहरण में हम वक्ता और उनके छोटे भाई के बीच ज्ञान में महत्वपूर्ण अंतर को उजागर कर रहे हैं. All right, moving on to compare with. This phrase is used to juxtapose two things, people or ideas, focusing on their similarities and differences in a more detailed manner. मतलब दो चीजों, लोगों या विचारों को एक साथ रखना और उनकी समानता और अंतर दोनों पर ध्यान देना. When we say X is compared with Y, we're delving deeper into the details, highlighting both similarities and differences. For example, let's compare the specifications of this smartphone with that of its competitor. And I'm comparing my test scores with my friends to see how we did. Using compared with, we're not just stating the contrast like in compared to. Instead, we're putting more emphasis on the detailed analysis of how X and Y stack up against each other. पहले उदाहरण में हम दो स्मार्टफोन के फीचर्स की तुलना कर रहे हैं और दूसरे उदाहरण में हम वक्ता और उसके दोस्त के टेस्ट स्कोर की तुलना कर रहे हैं. Last but not least, let's talk about in comparison with or to. This phrase is quite similar to compared with, and it emphasizes analyzing the similarities and differences between two or more things, people or ideas. यहाँ हम दो चीजों के बीच कंपैरिजन कर चुके हैं और हमें जो अंतर और समानताएं प्राप्त हुई है उनको एनालाइज कर रहे हैं. उदाहरण के लिए, in comparison with the previous year, this year's sales have doubled, and in comparison to her teammates, she is the fastest. When using in comparison with or to, we are pointing out a specific aspect or characteristic and how it relates to others in the context of comparison. यहाँ हम किसी चर की एक विशेषता को इंगित कर रहे हैं और यह देख रहे हैं कि ये दूसरे चर की उसी विशेषता से कैसे संबंधित है. जैसे पहले उदाहरण में हम इस वर्ष की बिक्री को देख रहे हैं और पिछले वर्ष की बिक्री से उसकी तुलना कर रहे हैं, यह दिखाते हुए कि इस वर्ष की बिक्री दोगुनी हो गई है. दूसरे उदाहरण में हम एक विशेष व्यक्ति की गति पर ध्यान दे रहे हैं, ये कहते हुए कि वह अपने साथियों में सबसे तेज है. So, to summarize, compares to highlight similarities, compared to focuses on contrasts, compared with delves deeper into the details, and in comparison with or to, emphasizes the analysis of similarities and differences in relation to a specific aspect. There you have it, folks. I hope this in-depth explanation cleared up any confusion you might have had about these phrases. Language can be a bit tricky sometimes, but with practice and understanding, you'll master it in no time. If you found this video helpful, give it a thumbs up, and don't forget to subscribe for more language tips and exciting content. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Stay awesome. Bye-bye.